فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے سول و عسکری اداروں کے تعاون کو ناگزیر قرار دے دیا ہے۔ فیلڈ مارشل نے اچھی حکمرانی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی اہمیت پر بھی زور دیا، جبکہ جنوبی بلوچستان کی سماجی و معاشی ترقی کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کو تربت کے دورے کے موقع پر فتنہ ہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشن سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکریٹری اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے 2 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ بنگلہ دیشی حکومت کی دعوت پر ہو رہا ہے۔ ڈھاکہ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیشی قیادت سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ اسحاق ڈار کی چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملاقات ہوگی۔ اسحاق ڈار خارجہ امور کے ایڈوائزر محمد توحید حسین سے بھی ملاقات کریں گے۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ علاقائی اور عالمی امور بھی ایجنڈے میں شامل ہیں۔ بنگلہ دیش نے 1971 کے بعد پہلی بار پاکستانی حکام کے لیے ویزا کی شرط ختم کر دی ہے۔ یہ معاہدہ 5 سال کے لیے نافذ العمل ہوگا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش اور پاکستان کے سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ رکھنے والے افراد کو اب دونوں ملکوں کے درمیان سفر کرنے کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نوبیل امن انعام یافتہ محمد یونس کی قیادت میں بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے باہمی ویزا استثناء کے اس معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ ان کے پریس سیکریٹری شفیق الاسلام نے ڈھاکہ میں نیوز کانفرنس میں بتایا کہ بنگلہ دیش کے 31 دیگر ممالک کے ساتھ بھی اسی نوعیت کے معاہدے موجود ہیں۔ اس معاہدے کے تحت پاکستانی حکام کو بھی بنگلہ دیش میں ویزا کے بغیر داخلے کی اجازت ہوگی۔ اور کراچی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ شہر میں دہشت گردوں کے سیف ہاؤس کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ ایڈیشنل IG CTT آزاد خان کے مطابق 18 مئی 2025 کو بدین کے 45 سالہ شخص کے قتل میں ملوث 4 افراد کو 8 جولائی کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان سے تفتیش کے دوران نیٹ ورک کا پتہ لگایا گیا۔ ملزمان نے 5 دن تک معطلی میں ریکی کی۔ منصوبہ ساز بیرون ملک مقیم سنجے نامی بھارتی ایجنٹ تھا۔ گرفتار ملزمان سنجے سے رابطہ میں تھے۔ بھارتی خفیہ تنظیم را نے علیحدگی پسند تنظیم کو بھی بطور ہتھیار استعمال کیا ہے۔ IG CTT آزاد خان کہتے ہیں کہ اس طرح کی دہشت گردی اسٹیٹ اسپانسرڈ دہشت گردی کہلاتی ہے۔ معاملہ ہر فورم پر اٹھائیں گے۔ گرفتار ملزمان سے تحقیقات جاری ہے۔ مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ضلع غزر کی تحصیل گوپس یاسین میں گلیشیئر پگھلنے سے ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ کے نقصانات کی ابتدائی رپورٹ تیار کر لی گئی۔ حکام نے نقصانات کی ابتدائی رپورٹ تیار کر کے اعلیٰ حکام کو ارسال کر دی ہے، جبکہ متاثرین نے حکومت سے فوری امداد کا مطالبہ کیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر گوپس یاسین اشیر افضل کے مطابق گلیشیئر پھٹنے سے تالیداس، مجوری، مولا آباد، ہاک سنگی، راوشن اور گود کے کئی دیہاتوں میں 330 گھروں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ کے بعد بننے والی جھیل سے پانی کا اخراج جاری ہے اور پانی کی سطح میں کمی آ رہی ہے، جس سے نچلے علاقوں میں کٹاؤ کا خطرہ کم ہو چکا ہے۔ دوسری جانب متاثرہ علاقے کے عوام کو واقعے کی بروقت اطلاع دے کر سینکڑوں جانیں بچانے والے چرواہے وسیعت خان کو نقد انعام اور تعریفی سند دے کر حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنیر کے علاقے پیر بابا بازار میں سینکڑوں دکانیں سیلاب سے مکمل تباہ ہو چکی ہیں۔ وہاں پر موجود ہمارے نمائندے دانیال عزیز سے جانتے ہیں۔ اس وقت میں ضلع بنیر میں پیر بابا بازار میں موجود ہوں، جہاں پر سینکڑوں دکانیں جو ہے سیلاب سے مکمل خراب ہو چکے ہیں اور جو دکاندار ہے ان کا کروڑوں لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے، لیکن ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے اور اب دوبارہ اس بازار میں زندگی کے اثرات نظر آنے لگے اور آہستہ آہستہ دکاندار جو ہے یا کاروباری حضرات وہ کوشش کرے کہ معمولاتی زندگی دوبارہ بحال ہو۔ اس وقت بھی ایک ایسے دکان میں موجود ہوں جن کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، لیکن انہوں نے اپنی دکان صاف کر دیا اور دوبارہ جو ہے انہوں نے اپنی فریزر جو ہے کہیں سے منگوا لیے اور دوبارہ دکان جو ہے انہوں نے شروع کر لیا۔ یہ بتائیں کہ کتنا نقصان آپ کا ہوا، کتنے فریزر جو ہے جل گئے تھے؟ ہمارا جو ہے نا یہ فریزر جو ہے نا یہ سارا خراب ہے اور کم از کم 600 فریزر جو ہے نا وہ نکل چکا ہے۔ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے جی کدھر چلا گئے کدھر نہیں چلا گئے۔ کم از کم 40-50 لاکھ ہمارا نقصان ہو چکا ہے۔ انہوں نے 2 فریزرز اپنے دوست سے لے کر آ گئے اور دوبارہ کچھ نہ کچھ انہوں نے شروع کیا۔ ان کے مطابق انہوں نے گھر چلانا ہے اور یوں اگر بازار جو ہے بند رہا تو گھر چلانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جی سوات میں سیلاب سے متاثرہ گھروں اور اسکولز تک رسائی کے لیے 150 مکین اپنی مدد آپ کے تحت گلیوں سے ملبہ ہٹانے میں مصروف ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں سوات سے جیو نیوز کے نمائندے احسان اللہ شاکر۔
जी बिल्कुल, स्वात में तबाहकुन सैलाब के बाद जहाँ कारोबारी तबका मुतासर हुआ है तो वहाँ पर इलाके के जो महल्ले है वो भी शदीद मुतासर है। इस वक्त यहाँ पर मैं एक स्कूल के साथ मौजूद हूँ जो कि यहाँ पर इसके साथ एक मदरसा भी है, ये शदीद मुतासर हो चुका है। और ये जायदाबाद का इलाका है जहाँ पर इस वक्त जो है लोग अपने मदद आप के तहत रास्ते को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो इस हवाले से मजीद उनसे जानते हैं। हम अपनी मदद आप के तहत आए हैं। यहाँ जो मोहल्ला है ये तकरीबन 6-7 फुट जो है ना ये रेत में और मिट्टी में दबा हुआ है। इसमें एक गर्ल्स स्कूल भी मौजूद है और इसमें एक बॉयज़ स्कूल भी मौजूद है और मोहल्ले में मतलब है कि बहुत सारा सामान इस तरह है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब ये जो लोग आए तकरीबन हम इस मोहल्ले में तकरीबन कोई 150 बंदे जो है ना वो काम कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। इतना नुकसान हुआ है, इससे पहले जितने भी सैलाब यहाँ आए हैं इतना कभी इतना नुकसान नहीं हुआ है। हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि हर जगह काम जारी है कि अगर छोटी मशीनरी फॉर एग्जांपल छोटा शेवल हो, डाइनी हो, ताकि वो आए। एक तो छोटे छोटे गलियाँ हैं इसमें तो गाड़ी नहीं घूम सकती, लेकिन ये लोग मेहनत कर रहे हैं और बाहर ये सारा सामान निकाल रहे हैं, मलबा निकाल रहे हैं। तो अगर वो गाड़ियाँ आ जाएँ और ये मेन रास्ते से ये चीज़ें हटाए तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर मुतासिरीन का कहना है कि हुकूमत इनके लिए यहाँ पर गाड़ियों का बंदोबस्त करे और यहाँ से जो मलबा है वो उठाए और किसी महफूज जगह पर मुंतकिल करे ताकि यहाँ पर मामूलाती ज़िंदगी बहाल हो। स्वात में सैलाब से 27 साल खातून का घर भी मुतासिर हुआ है। घर में खाने को कुछ बचा है, ना रहने के लिए जगह। मज़ीद बताएंगे डॉक्टर महबूब अली। जी बिल्कुल, स्वात के मरकज़ शहर मिंगौरा के मुख्तलिफ मोहल्लों जिसमें बांग्लादेश, मुलाबाबा, शहीदाबाद, जाहिदाबाद और मुख्तलिफ मोहल्ले शामिल है जहाँ पर सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। इस वक्त मैं दरिया के किनारे एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ पर एक खातून जो है उनके शौहर जो है बेरोज़गार है जबकि उनके 6 बच्चे हैं। उनका भी इस सैलाब के बाइस बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। बस नुकसान तो बहुत सारा हुआ है और कुछ भी नहीं बचा है। बस सिर्फ अल्लाह का आसरा है और आपके सामने है। बस सब कुछ आप लोग देख रहे हो, ना खाने पीने का कुछ है, ना बैठने का कुछ है। बस अल्लाह ताला है हमारा आसरा। घर में 3 फैमिलियाँ रहती है, बस 3 फैमिलियों के बहुत नुकसान हुआ है। बस सबके भी बच्चे हैं। तो आप यहाँ पर गुजर बसर, ये घर क्या रहने के काबिल है? क्या करते हैं आप यहाँ पे, किस तरह रहते हैं? बस यहाँ तो हम नहीं रहते, सफाई करने के लिए आ जाते हैं और रात के लिए कहीं चले जाते हैं बहन के घर, अपने रिश्तेदारों के घर। यही उनका कहना है कि हम यहाँ पे ये लोग जो है ये सब सफाई के लिए यहाँ पर पहुँच जाते हैं, रात को अपने बहन के घर जाती है और यकीनन जिस घर में हम मौजूद है तो लगता यूँ है कि यहाँ पर रहने को मतलब बहुत मुश्किल हुआ है यहाँ पर रहना। और जिस तरह ये खातून कह रही है कि घर में जो कुछ था तो वो सब के सब जो है वो सैलाबी पानी की नज़र हो गया है। लाहौर में सजा पाकिस्तान आइडल का मेला, ऑडिशन के लिए सबको है इंतज़ार। कतार में खड़े लड़के से एक से बढ़कर एक टैलेंट के हामिल नजर आ रहे हैं। मजीद बता रही हैं दुआ मिर्जा। जी, लाहौर में पाकिस्तान आइडल का काफिला पहुंचा है और ऑडिशन शुरू हो चुके हैं। लाहौर का मौसम आज बड़ा बेरहम है, लेकिन चूंकि ये जिंदा दिलों का शहर है इसलिए जज्बे बहुत जवान है और बहुत सा टैलेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं। सो यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑडिशन के बाहर भी एक ऑडिशन हो रहा है और लोग आपस में एक दूसरे का ऑडिशन ले रहे हैं और यहाँ पर भी टेस्ट किया जा रहा है कि किसमें कितना टैलेंट है। लड़कों के साथ लड़कियाँ भी मुकाबला भरपूर करेंगी। आज हर किसी को लगता है कि वो पाकिस्तान आइडल बनेगा, लेकिन बनेगा कोई एक। अच्छा है बुरा है, but in any case you get these statistics from chain analysis etc. And when you see 20 to 25 million citizens of this country participating in this activity in one form, shape or the other, कोई डबल कर रहा है, कोई बड़ा कर रहा है, कोई अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई लॉसेस कर रहा है, and then the volume discussion is up for discussion. Whether it's X billion or Y billion, I don't want to go there. But the reality is when 10 to 15% of the citizens of this country are participating, and mostly youth, the young and the restless who are sitting here in this room as well, you cannot ignore that. You cannot ignore that. And that was the genesis of the entire discussion. जहाँ से हमने शुरू किया कि अगर हम इसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि दिस इज समथिंग, एंड आई केप्ट ऑन सीइंग वेयर पाकिस्तान इज नंबर 10, नंबर 7 एंड वेयरएवर नाउ वी आर, तो हाउ कैन वी इग्नोर दिस? एंड देयरफॉर द लीडरशिप दैट लम्स हैज टेकन, एंड आई अप्रिशिएट देयर इज सम sponsor who has come in
to set up this center of excellence at LUMS, which I think is fantastic and wonderful, because it's all about education and seminars like these, because that's how we're going to scale it up. Now, from my perspective as the Minister of Finance and Revenue, there was another angle, and that was the regulatory angle, because it's very clear that if a certain level of activity is happening, and happening at this scale, it's only a question of when, not if, that we are going to get into trouble as a country, as a sovereign again. In terms of KYC, AML, sanctions, transaction monitoring. बड़ी मुश्किल से 5-6 साल लगाकर हम ग्रे लिस्ट से निकले हैं. And this cannot be a cause to go back onto that situation. So इसमें there's an offensive element, there's an economic element, and there's a defensive element from a regulatory angle. So अगर मैं पहले बात करूं कि why I think this is an opportune moment for Pakistan to take this forward with your help. First are the economic drivers. I'm sure ये आपने सारी बातें यहाँ की होंगी, और you will do it during the rest of the afternoon as well. So from my perspective, 2-3 उसकी thematic aspects हैं. एक उसका aspect जो है वो financial inclusion का है. दूसरा उसका aspect है transparency का, speed का. Because we talk about technology, and technology is, I mean, all of you know this better than I am as a layman. All I know is when you talk to your customers, you talk to your clients, you talk to the citizens of this country, what is technology? When we talk about automation, what we talk about digital journeys, what is that? It's all about being faster, cheaper, better. तो हम अपने नज़रिए से तो देखते हैं, लेकिन ये जो golf की terminology, it's not how you drive, how you arrive, because that's what everyone wants: faster, cheaper, better. And if blockchain and AI and crypto, all of this Web 3.0 overall in the context of new economy can deliver that for Pakistan, well, that is what we, and I'm sure collectively, what we are shooting for. अब जहाँ तक use cases का ताल्लुक है, so I'm sure इसमें आज सुबह भी बात हुई होगी. I'm sure you will talk about it in the rest of the afternoon as well. Coming from the banking industry, even here in Pakistan, the project which got started a couple of years back, and this is with respect to EKYC. So this is using the blockchain methodology. And this, while I was in Singapore, obviously that was already there. तो आज जब हम एक account खोलने जाते हैं, so even before we get to the whole compliance discussion and what we need for the compliance discussion, we have this thadda of documents. आज बाहर तो आपने जो account खोलना है वो खोलना है, यहाँ कहीं पाकिस्तान में जाके account खोलने की कोशिश तो करें. तो जो thadda of documents we do with one bank, and I'm coming from the banking industry as well. Why do we need to repeat it if you want to open it the same account or similar account with 2 other banks? तो ये जो पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन और स्टेट बैंक ने ये काम शुरू किया आज से 2-2.5 साल पहले, so उसमें अच्छा है कि we have moved into that discussion that with your consent, your documents can be uploaded onto a distributed ledger, और वो जो सारी फील्ड है उसमें आपके कंसेंट से अगर एक बैंक के साथ आपका अकाउंट है, maybe they still want some delta from you in that particular bank given their compliance requirements, but I would imagine 90% of the stuff would be done because they will have the documentation with your consent. So I think that is a use case which is already in vogue. And has to be scaled up, but I think it's moving in the right direction. उसके बाद जो the lifeline of the country, which is remittances.
A number of firms are already coming in, talking to us, talking to SAPM around where they are, where they want to go, and how they're already intermediating these flows. Back to better, cheaper, faster. Agriculture की बात हुई है, IT की बात हुई है, freelancers की बात इसमें है, and then as we go up the value chain in terms of energy, and with respect to the surplus energy जो इस वक्त है available in the country, and how do we sort of take this forward in terms of crypto mining and AI data centers, and we take it forward from that perspective, and I'm sure some of that or some of these use cases will be touched upon during this seminar as well. अब इसमें जो तीसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट ने जो इसमें थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है, starting with the Crypto Council and then moving across to the ordinance which has already gone through, which is PVARA, Pakistan Virtual Asset Regulatory Authority. उसका पहला जो सेशन है या पहला इजलास है, that will be inshallah on Monday afternoon, and there are a number of agenda items which are going to go through from a policy perspective, and then how so we take it forward. और इसमें we have been very blessed in terms of getting some international collaboration and international success transfers, because अगर और मुल्क इस पे already जा चुके हैं या जा रहे हैं, why do we need to reinvent the wheel here, right? We need to make sure it's Pakistan first. We need to make sure that our interests are not compromised as we go forward. But again, at the same time, we don't need to start from ground zero. We can take up those templates, use those templates, and see whether that works for Pakistan or not. And that's what we have done in terms of the ordinance and in terms of the bill, which has now been, because ordinance has to become an act. And next week we have a discussion in the Senate Finance Committee. I'm sure it'll go to the National Assembly and ultimately, inshallah, get approved. लेकिन उसमें हमने जो advantage ली है from VARA in Dubai, MES in Singapore, and MiCA out of EU, because these countries have been at it, and so we are very grateful to these countries and in terms of their willingness and ability to help us in terms of fast tracking our journey here. और उसके अलावा, I mean, it's been in the public news, so I don't need to repeat that in terms of some of the international experts who have been, managing their own exchanges and their businesses, and they are helping us from an advisory perspective as well. मैं आखिरी चीज़ सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए, from the time I become the finance minister, and the Prime Minister has been very vocal about this as well, I'm very clear that the private sector has to lead this country. And the government just needs to provide the ecosystem, provide the enabling environment, and that's what we are doing in terms of the regulatory regime, etc., and then get the heck out of it and let the private sector take things forward. लेकिन इस केस में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि as a layman who doesn't know much about it, I would have loved to just stay here for the entire day to come up the curve as well from an educational perspective as well. लेकिन I would suggest कि आप इसको थोड़ा सा trilateral रखें. आम तौर पे मैं नहीं प्रपोज करता कि गवर्नमेंट को आप इन्वॉल्व करें या गवर्नमेंट के साथ कुछ करें, लेकिन I think between the private sector and academia and the government, and therefore I'm slightly surprised that the SAPM who's been appointed on crypto and blockchain is not here today. My own view is he should have been here and to provide his views. जी आकिब साहब, PSC की तरफ से आज present है, so
No, وہ تو آپ ہیں اور آپ ریگولیٹری سائڈ سے بھی ہیں, کرپٹو کاؤنسل سے بھی ہیں, but there is a special assistant to the Prime Minister who has been appointed for this purpose, and میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ as you take it forward to engage with him, because number of things, he is also the chairman of PVARA, and I do think it'll be a good way forward to engage, because what I would like to see, and with your help اور آپ کے جو سینٹر آف ایکسلنس ہیں کہ آج آپ اسلام آباد تشریف لائے, and you have, you know, as I said, all the وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ڈیجیٹل سرمایہ کاری میں شفافیت کو یقینی بنانا ہوگا, مستقبل میں ڈیجیٹل اثاثوں کے رجحان میں اضافہ ہوگا.